Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. Dear students, in this video, we will discuss the class 10th biology most important short questions. Inshallah, in the next video, we will discuss the most important long questions of biology according to the board point of view. So stay connected, stay tuned. डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम। तो हम चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आपने स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स इसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी, functions of mucus, difference between the respiration and breathing, what is diaphragm, trachea, symptoms of pneumonia and asthma, acute and chronic bronchitis, effects of smoking, voice box। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो पहला शॉर्ट है होम्योस्टेसिस एंड एग्जाम्पल। आपके पास बायो में भी लाइक अदर साइंस सब्जेक्ट्स कोई डेफिनेशन आती है और उसके रिलेटेड अगर एग्जाम्पल पॉसिबल है तो आपने लाजमी उसको लिखना है। अगर आप लिखेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर secretion, glomerulus filtrate, lithotripsy, renal cortex and renal medulla, kidney transparent, dialysis, kidney stone and its symptoms। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप्स नेम्स। Other is spinal cord and its function. Components of coordination: differentiate between the stimulus and receptor, differentiate between the reflex action and reflex, somatic and autonomic nervous system, myopia and hypermetropia, define hormone and endocrine system, pituitary gland and its functions. Now we will see the chapter number 4 most important short questions, and the first question is skeleton and endoskeleton, difference between the reflexor and tensor, osteocytes, number of bones in the axial and appendicular skeleton, types of joints, difference between the tendons and the ligaments, what is bone, difference between the compact and the spongy bone, osteoporosis. Now we will see the chapter number 5 most important short questions, and the first question is reproduction and its types, fragmentation, multiple fusion, benefits and disadvantages of vegetative propagation, endospores, pollination, self-pollination and cross-pollination, alternation of generations. And the chapter number 6 most important short questions. The first short is what is trait, define heredity with example, codominance and incomplete dominance, difference between the genotype and phenotype, difference between the dominant and the recessive allele, difference between the gene and the allele, artificial and the natural selection, difference between the homozygous and the heterozygous allele, difference between the translation and transcription. Chapter number 7, and the first most important short question is define ecology and community, define ecosystem, define mutualism with example, what is acid rain and give its effects, predation with examples, difference between the
food chain and the food web, difference between the ecto and endoparasites, difference between the nutrification and denitrification, what is symbiosis. Chapter number 8, most important short questions. And the first most important short question is, what is biotechnology? Single cell protein, what is fermenter and give its advantages? Purposes of genetic engineering, what is recombinant DNA? Define fermentation. Alcoholic and the lactic acid fermentation. Now we will see the chapter number 9, which is the last chapter of our book. इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और द जो पहला शॉर्ट है वो क्या है? डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड गिव इट्स रिलेशन टू द फार्मेसी, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, narcotics, sedative and its harms, difference between the analgesics and antibiotic. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने सबसे पहले पेपर पेयरिंग स्कीम देखनी है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड की हुई है। वहाँ से आपने लाजमी पेपर पेयरिंग स्कीम देखनी है, और फिर उसके बाद वहाँ से आपने चैप्टर्स लॉन्ग के सिलेक्ट कर लेने हैं, और शॉर्ट वाइज तो आपने ओवरऑल सारा ही प्रिपेयर करना है, लेकिन वो चैप्टर्स जिनमें नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। और इन शॉर्ट को, वैसे तो आपको पूरी बुक करनी चाहिए, लेकिन आपने इन शॉर्ट को लाजमी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, तो आपने पेपर पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और ये भी पूरी कोशिश करूंगी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करूं। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।